Shirdi Sai Vishwa Sai. A recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. Shubham Bhavatu. गिरिधर नागर कुंज विहारी गिरिधर नागर कुंज विहारी मधुवन संचारी पर्ति विहारी मधुवन संचारी पर्ति विहारी मधुवन संचारी पर्ति विहारी गिरिधर नागर कुंज विहारी. Namaskar, Sai Ram. I'm Ashok Vyas and you're watching Shirdi Sai Vishwa Sai. Shirdi Sai, Sai Baba. Relationship with the divine, how it changes us and how it makes us a little bit more capable of facing the ups and downs of life without losing evenness of mind. That power which helps us in sustaining a sense of joy comes by grace. Shirdi Sai Guru Datta Treya Guru Guru Datta Guru Datta Treya Guru Datta Guru Datta Guru Datta Treya Guru Datta Guru Datta Guru Datta Treya Guru Datta Treya Guru Datta Guru Datta Guru Datta Treya Guru Datta Guru Datta Guru Sri Pada Vallabha Datta Guru Datta Guru Sri Pada Vallabha Datta Guru Datta Guru Swami Samartha 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 Datta Guru 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 Om Sri Sai Ram Guru Deva Datta 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 ॐ मर्त्याभयप्रदाय नमः ॐ जीवाधाराय नमः ॐ सर्वाधाराय नमः Dear divine souls, if we do worship there, it is not an idol. If you think it's an idol, it is an idol. But if you think it is the Lord Sai sitting there, He will be giving power to you. Yad bhavam tad bhavati. Gurus, spiritual leaders are like mirror. If you look into mirror, you are looking your own face, your feelings. According to your feeling in your mind, you will be getting reflection, refraction, that's only. So, doing puja is not to the ideal, to the power. Words are mere words till they get the support of a voice which is trained and which is full of devotion and dedication, and then those words, those simple syllables become part of the flow of a music which touches our heart and also purifies us. कोई बोले राम राम कोई
कोई खुदाए कोई सेवे गोसैया कोई अलाही कोई सेवे गोसैया Gosaya is what the Sikhs refer to him. कोई सेवे गोसैया कोई अलाही कोई कारण करण करीम कुर्बाधार रहीम कारण करण करीम राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि 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 राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि राम कृष्ण गोविंद जनार्दन अच्युत परमानंद बोल राम कृष्ण गोविंद जनार्दन अच्युत परमानंद बोल वेरी गुड बोल राम कृष्ण गोविंद जनार्दन अच्युत परमानंद बोल राम कृष्ण गोविंद जनार्दन अच्युत परमानंद राम कृष्ण गोविंद जनार्दन अच्युत परमानंद राम कृष्ण अच्युत परमानंद ओ राम कृष्ण गोविंद जनार्दन अच्युत परमानंद ओ राम कृष्ण गोविंद जनार्दन अच्युत परमानंद राम कृष्ण गोविंद जनार्दन अच्युत परमानंद ओ राम कृष्ण जनार्दन अच्युत परमानंद जय जय राम साई राम जय जय राम ओ जय जय राम साई राम जय जय राम any way which is dear to you which might help someone in connecting with Baba? Just say Sai Ram all the time. Whenever you get time, just say Baba Sai Ram. And wherever you want him to be, in whichever form, he'll be there with you. She also shared the incidents that took place in 1985 or so when she visited Shirdi with her husband, and there was something special that happened to her. And she is very playful in sharing the response of her husband while he listened to experience of her, which was kind of supernatural in its nature. Sai Ram, I went to Shirdi in 1985 with my husband and 2 children. And then that was my first visit to Shirdi. And then when I went to touch the Padukas, all of a sudden when I bent down and I just got up, I felt some supernatural power enter into my body. And then I just got up like that. And then I got fever and I started shivering right then, you know. I felt something enter into my body. And then when I told my husband that this thing has happened and then I feel feverish and shivering, I went normally like a normal bhakt, you know. And then he said, Bhanu, stop acting like that. You look so strange. Everybody's looking at us and all that. And he was getting little shy and irritated. Then from there, we went to Dwarka Mai, to put the udi and all that. And I was shivering and sweating and they were holding my hand. My children were both small. And then we went to the Dwarka Mai and then everybody was pushing and all that. And I was asking my husband's help. He didn't listen. So there and then... First time in his life, he got pickpocketed, he lost his purse and everything. So you should always, when I trust God, Baba a lot, and he also, they have walked to Shirdi from Bombay to Shirdi many times, my son and husband. But, you should not feel shy, when anybody tells somebody anything like that, you should trust him. And he gave me the opportunity to serve him from then.
Then I got an opportunity to work on this school project, and the first people who constructed, made Baba. The son has, with the help of his son, made the first Baba in 1990 in Shirdi, in Bombay. 1990, not 1990, it is 1987, 88. And then I got the opportunity he gave me to make his temple. And the main first murti was made in Bombay, in Charni Road. So the son made it. After that order, they got hundreds of order, and this is one of the murti from the same order which Baba has chosen for me to do it. So I am blessed. Every minute I am blessed. And my daughter's miracle happened like that, Then that's how from Bombay she went to Hyderabad to Shirdi Sai Public School, and from there, education-wise, you couldn't turn back. I had an Anglo-Indian to teach her, but she couldn't teach. But Baba taught her, and today, her health-wise and education-wise, whatever we are today is because of Baba. When I tell you, my whole body, every hair, and any time I talk about him, that's it. It stands up. Bhanumati Rajji, when she says that she's blessed, and standing near her, I feel that I am blessed. And now that you are listening to her experience, I'm sure Baba is asking me to tell you that you are also blessed. Mantras. Om Gananam Tva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinamupamashramastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspadana Shrunvannotibhasya Dasadanam. And now the time for the sequence of Sai Charitra Parayana. Sadanimba vrukshasya mooladhivasat suthasravinam tiktamapyapriyantam tarum kalpa vrukshadhikam sadhayantam नमामीश्वरम सद्गुरुम साईनाथम। मैं ईश्वर के दर्शन करता हूँ, उसको विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। वे सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं अनल हक सो हम हूँ। वे सदा यही कहा करते थे कि मैं तो यादे हक दासो हम हूँ। अल्लाह मालिक हमेशा उनके होठों पर था। हम अन्य संतों से परिचित नहीं है और न हमें ज्ञात है कि वे किस प्रकार आचरण किया करते हैं अथवा उनकी दिनचर्या इत्यादि क्या है। ईश कृपा से केवल हमें इतना ही ज्ञात है कि वे अज्ञान और बद्ध जीवों के निमित्त स्वयं अवतीर्ण होते हैं। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हम में संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। अब हम मुख्य कथा पर आते हैं, योग और प्याज। एक समय एक योगाभ्यासी नाना साहब चांदोकर के साथ शिरडी आया। उसने पातंजल योग सूत्र और योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वो व्यावहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वो थोड़े समय के लिए भी समाधि न लगा सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वो शिरडी आया और जब मस्जिद में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देखकर उसे ऐसा विचार आया कि वो कच्ची प्याज सहित सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा अंतर्ज्ञान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहब बोले कि ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयां बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे उनका हल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और ऊदी लेकर वो शिरडी से चला गया। श्यामा की सर्पदंश से मुक्ति। कथा प्रारंभ करने से पहले हेमाड़ पंत लिखते हैं कि जीव की तुलना पालतू तोते से की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही बद्ध हैं, एक शरीर में और दूसरा पिंजड़े में। दोनों ही अपनी बद्धावस्था को श्रेयस्कर समझते हैं, परंतु यदि हरि कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए और वो उनके ज्ञान चक्षु खोलकर उन्हें बंधन मुक्त कर दे तो उनकी चेतना का स्तर उच्च हो जाता है, जिसकी तुलना में पूर्व संकीर्ण स्थिति सर्वथा तुच्छ ही थी। गत अध्याय में किस प्रकार श्री मिरीकर पर आने वाले संकट की पूर्व सूचना देकर उन्हें उससे बचाया गया, इसका वर्णन किया जा चुका है। अब उसी प्रकार की एक और कथा का श्रवण करें।
एक बार श्यामा को विषधर सर्प ने उसके हाथ की अंगुली में डस लिया। समस्त विष शरीर में विष का प्रसार हो जाने के कारण वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करके क्रंदन करने लगे कि अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। उनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान विठोबा के पास ले जाना चाहते थे, जहां इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं की योग्य चिकित्सा होती है। परंतु श्यामा मस्जिद की ओर ही दौड़ा, अपने विठोबा श्री साई बाबा के पास। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते देखा तो वे झिड़कते और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान कृतज्ञ बम्मन, ऊपर मत चढ़, सावधान, यदि ऐसा किया तो। और फिर गर्जन करते हुए बोले, हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री साई बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उलझन में पड़ गया और निराश होकर सोचने लगा कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साई बाबा मात्र असहायों के आश्रय दाता हैं। जब वे ही इस प्रकार मुझे अपने यहां से भगा रहे हैं तो मैं अब किसकी शरण में जाऊं। उसने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी और वहीं शांति पूर्वक बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्ववत शांत हुए तो श्यामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर ना निकलो। मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही पीछे से बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहब दीक्षित के द्वारा यह कहला भेजा कि वो इच्छानुसार भोजन करें, घर में टहलते रहें, लेटे नहीं और न शयन करें। कहने की आवश्यकता नहीं कि आदेशों का पूरी तरह पालन किया गया और थोड़े समय में ही वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इस विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द हट, दूर हट, नीचे उतर श्यामा को लक्ष्य करके नहीं कहे गए थे जैसा कि प्रतीत होता है, परंतु उस सांप और उसके विष के लिए ही यह आज्ञा थी, अर्थात श्यामा के शरीर में विष न फैलाने की आज्ञा थी। अन्य मंत्र शास्त्रों के विशेषज्ञों की तरह बाबा ने किसी मंत्र या मंत्रोक्त चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के चरणों में ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि यदि मायायुक्त संसार को पार करना हो तो केवल श्री साई चरणों का हृदय में ध्यान करो। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्राविणं तिक्तमप्यप्रियन्तम् तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। Such there is no me, there is nothing. Me means him, God, universe. It's a power, something. I believe in that power. That is giving me energy and sing nicely or beautifully, whatever. I sing for myself, first of all. I feel God is there within me. He's here. He comes like this and he only sings. And he goes back. I don't know. It's a fabulous experience. I experience everything while I'm singing. I'll travel. I travel. Sometimes I go to a big mountain. Sometimes I feel I'm in a flower bed. Something that's I can't tell you. It's such a great experience one should experience in the lifetime. I must thank you, and we, when I say we, I think whosoever hears this experience or someone at that sensitive level, it makes us realize that life is beautiful. Of course life is beautiful. Of course life is beautiful. And many people fail to see the beauty of life, and maybe through your singing, it helps in seeing the beauty of life. But allow me to ask you, if you go back, recollect your formative years, is there anything that you would say helped you in developing or having this perception or this understanding or whatever we call it? My mom is a big role model of my life. She always says that whatever I ask her when I was small, whomever, if somebody comes to her and asks her, what do you want in life? She simply says nothing.
always, always. So I used to think a lot about her, and her goal is to see me there on the top of the list. You know, of course in Carnatic vocal, but I became a playback singer. Even though she don't expect anything from anybody, she always feel that it's a God's gift. See, there is a purpose for this life. He has given you something. So what are you giving back? She always she asked only once. Then I started thinking about this. See, whenever of course lows, ups, highs, downs, these are all very natural and part of life for any human being. But I take it in a I sometimes I can't help it, but most of the times I take it in a positive way, and I feel I'm special because God has given me some talent that helps me to come out of that any kind of situation so fast. Can't even explain you. So whenever I think about my talent or voice or singing, the art, I feel I'm special. Why do I have to go back to all worries, and why do you have to think about I don't want to waste a second. So that's where I learned a lot from her. I feel there is a purpose. She is a singer. She's my first guru. So that's it. Whatever you call it as, if it is whatever, there is no name, nothing. It's just life is beautiful. You were referring to your experience of darshan of Satya Sai Baba, probably in Telugu, which I tried to gather, and probably you were mentioning about your experience of the oneness between no difference being between Shirdi Baba and something like that. Was that so? Yeah, see, we are giving names like Shirdi Baba, Puttaparthi Baba, Christ, Venkateswara Swami. We have photographs with us, but all comes to I feel forms of they all one. We are giving names to all of them, and if I like the name Akash, probably I may give that name to some power, but I feel everything is one. That is power. That is Omkaram. World is actually running only one Omkar. And looking forward to meeting you again next week. This is Ashok Vyas saying Sai Ram. Namaste. गिरिधर नागर कुंज विहारी गिरिधर नागर कुंज विहारी मधुवर संचारी